Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about classification of noun according to old grammar or traditional. According to old grammar, there are 5 types of noun. First one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, and five abstract noun. According to old classification, there are 5 types of noun in grammar. First one proper noun, second common noun, third collective noun, fourth material noun, and five abstract noun. Now we will discuss in detail. First one, proper noun. Proper noun is the particular name of any creature, place or thing. Proपर नाउन जो होता है वो किसी भी क्रिएचर का, प्लेस का और थिंग का पर्टिकुलर नेम होता है। इसके अंदर हमारा जो प्रॉपर नाउन में क्रिएचर मीन्स दैट प्राणी, इसमें सभी इन्वॉल्व होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, विल्ड एनिमल्स, पर्सन्स, बर्ड्स, ऑल इन्वॉल्व क्रिएचर, प्लेस और थिंग। Example of proper noun. Timothy is a dangerous tiger. In this sentence, Timothy and tiger both are noun and tiger is common noun and Timothy is a proper noun because it is the name of particular name of a tiger. So Timothy is a proper noun. Second example, Seema is a good girl. In this sentence, Seema and girl both are the noun, but girl is common noun and Seema is a particular noun because Seema is the particular name of a girl. Third example, Delhi is the capital of India. In this sentence, India and Delhi both are the noun. Delhi is the proper noun and India is also proper noun because Delhi is the particular name of capital and India is the particular name of a country. Now we will discuss about common noun. Common noun. It refers the same kind or class of creature, place or thing. It refers the same kind kind. Common noun. It refers the same kind or class of creature, place or thing. कॉमन नाउन है वो रेफर करता है सेम काइंड, प्रकार या सेम क्लास के क्रिएचर को, प्लेस को और थिंग को। मीन्स दैट कॉमन नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड द कॉमन नेम ऑफ creature, place or thing. For example, Timothy is a dangerous tiger. In this sentence, two nouns are used, Timothy and tiger. Tiger is our common noun because it refers the same class of animal, tiger, and its particular name Timothy, it is a proper noun. Seema is a good girl. In this sentence, girl and Seema both are the noun. Seema is a particular name of a girl, is a proper noun and girl is our common noun because it refers the same class. Yeah, girl, same class. Delhi is the capital of India. In this sentence, capital is our common noun. Now we will discuss about collective noun. Collective noun. It refers the group or collection of creature, place और thing. collective noun जो होता है वो ग्रुप नेम या जो collection of things, place और creature उनको कहा जाता है। collective noun जो होते हैं वो किसी ग्रुप के नेम को रेफर करते हैं या collection को, थिंग्स के, प्लेसेस के, एक्सेट्रा।
Now we take an example like that class. Class is our collective noun. In class, boys and girls both are present. These boys and girl both are the common noun, and particular name of boy and the particular name of girl are the proper noun. Like that, Seema, Geeta, Rohan, Mohan, etc. These are the proper noun. For example, collective noun herd of cows. Cows का जो जब काउज इकट्ठे होते हैं तो उनका जो समूह होता है, जो ग्रुप नेम होता है वो हर्ड होता है, उसको हर्ड बोलेंगे। हर्ड इज आवर कलेक्टिव नाउन। पैक ऑफ कार्ड्स, पैक इज एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। कमेटी ऑफ मेंबर्स, कमेटी इज ए कलेक्टिव नाउन। बैंड्स ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड्स इज अ कलेक्टिव नाउन। दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। ग्रुप नेम जो होता है वो हमारा कलेक्टिव नाउन होते हैं। Abstract noun. Abstract noun. Abstract noun. Abstract noun is a word which is used for an action, a state, or a quality. Now I will repeat again. Abstract noun is a word which is used for an action, a state, और ए क्वालिटी है। एक्शन मीन्स दैट कार्य, वर्क, स्टेट अवस्था, क्वालिटी गुण, इनके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाफ्टर इज अ गुड एक्सरसाइज। इन दिस सेंटेंस लाफ्टर, लाफ्टर इज एन एक्शन। हम हंसते हैं तो कोई एक्शन होता है, तो लाफ्टर इज अ एग्जाम्पल ऑफ collective noun. Poverty, poverty is a bad curse. In this sentence, poverty is a state. Poverty is an example of collective noun. Poverty is a state. Poverty, childhood, adolescence. Next and last 5 type material noun. Material noun denotes the name of material from which they are made. Material nouns है वो किसी मटेरियल के नेम को दर्शाता है जिससे वो बना हुआ होता है, यानी जो सेम थिंग से बना हुआ होता है, सेम चीज़ से होता है, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। फॉर एग्जांपल, कॉपर, मिल्क, ग्लास, एट्सेट्रा। वी टेक एग्जांपल लाइक डेक्स। डेक्स इज मेड फ्रॉम वुड और आयरन, बट we can't say dex is a material noun because both materials are used, iron and wood both are used for making a dex. We can say that dex is not an example of material noun, is the example of